Hare Prabhupada, 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 Jai Ho Jaya, Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devam Saraswatam Vyasam Tato Jayamudijayat. Before reciting the Śrīmad-Bhāgavatam, which is our very means of conquest, श्रीमद्-भागवतम के पाठ करने से पहले जो कि श्रीमद्-भागवतम सत्य का विजय प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये श्रीमद्-भागवतम भगवान से अभिन्न है। one must first offer his respectful obeisances हमें पहले प्रणाम करना चाहिए under the personality of Godhead, Lord Narayan, भगवान नारायण के चरण कमलों में हमें under Narayan Rishi, the supermost human being, और नारायण ऋषि के चरण कमलों में हमें unto Saraswati, the goddess of learning, और सरस्वती देवी जो गॉडेस ऑफ लर्निंग है, विद्या की देवी है, उनके चरण कमलों में हमें प्रणाम करना चाहिए। and unto Srila Vyasadeva, the author and the compiler of this great Vedanta literature. और श्रील व्यासदेव जो रचयिता हैं श्रीमद्-भागवतम के, उनके चरण कमलों में हमें प्रणाम करना चाहिए। And unto Srila Prabhupada, his divine grace. और श्रील प्रभुपाद जी, उनके चरण कमलों में हमें प्रणाम करना चाहिए। Today we are hearing the Śrīmad-Bhāgavatam, आज हम श्रीमद्-भागवतम सुन रहे हैं, Canto 3, Adhyaya 11, Shloka number 37. क्योंकि इसका 11वां अध्याय श्लोक संख्या 36 पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी से निवेदन है कृपया श्रीमद्-भागवत पाठ सुनिए, कृपया शांति बनाए रखें और भागवतम सुने। Ayaṁ बोलो। भागवत भगवान से अभिन्न है। Maman said we should do this kind of quickly because we're going to have a tree planting ceremony. Ayaṁ bolo. Tu kathitaḥ kalpo dvitīyasyāpi bhārata Vārāha iti vikhyāto yatrāsīc chūkaro hariḥ. Ayaṁ tu kathitaḥ kalpo dvitīyasyāpi bhārata Vārāha iti vikhyāto yatrāsīc chūkaro hariḥ. Bolo. ayaṁ to kathitaḥ kalpo dvitīyasyāpi bhārata vikhyāto yatrāsīc chūkaro hariḥ. ayaṁ to kathitaḥ kalpo dvitīyasyāpi bhārata
I am this. 2. But kathitaḥ, known as kalpa, the current millennium, dvitīyasyāpi, of the second half, api, certainly, bhārata, O descendant of Bharata, Varāha, iti, thus, vikhyāto is celebrated, yatra, in which a sit appeared, chūkaro, hog shape, Hare, the personality of Godhead. Translation and purport by Srila Prabhupada. O descendant of Bharata, the first millennium is the second half of the life of Brahmā, is also known as the Vārāha millennium, because the personality of Godhead appeared in that millennium as the hog incarnation. Purport. The different millenniums known as Brahmā, Padma, and Vārāha Kalpas appear a little puzzling for the layman. There are some scholars who think these kalpas to be one and the same. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the Brahma Kalpa in the beginning of the first half appears to be the Padma Kalpa. We can, however, simply abide by the text and understand that the present millennium is in the second half of the duration of the life of Brahma. Mukam karoti vachalam pangu langayate girim yat kripatamaham vande Shri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Srila Prabhupada Patita Pavanam. This verse places where we are now in this time and space of which we are presently living. ये वर्ष श्रीमद्-भागवतम का बता रहा है कि हम लोग अभी कहाँ हैं और इस समय और परिस्थिति देश काल के अनुसार हमारे बारे में बता रहे हैं कि अभी हम कहाँ पर स्थित हैं. We are in the second half of a day of Brahma. हम लोग ब्रह्मा जी की जो आयु है उसके द्वितीय अवधि में हैं. This is called the Vārāha millennium. और इसको वराह मिलेनियम के नाम से वराह कल्प के नाम से जाना जाता है. So in this time is when our Lord Varāha appeared. इस समय जब भगवान वराह देव अवतरित होते हैं. Now, since there's a very short time for me to speak Bhagavatam, if the devotees will allow me, I will stray from this verse a little on what we're going to speak about. तो क्योंकि ये बहुत शॉर्ट क्लास है अभी आज, तो डिवोटीज हमें जो अनुमति दें कि हम थोड़ा सा इस वर्ष से हटके भी कुछ और डायरेक्टली हम उसको बोलें. Yesterday we spoke about the beginning of Brahma and how he appeared and how he began the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. कल हमने सुना कि कैसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं भगवान की नाभि से जो कमल निकलता है और कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना स्टार्ट की, इसके बारे में कल हमने सुना. और ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय कैसे उन्होंने फाउंड किया हमने सुना. But now I'd like to jump forward to Srila Prabhupada's mission. और आज हम श्रील प्रभुपाद की लीलाओं के बारे में चर्चा. Srila Prabhupada appeared to fulfill the prophecy of Lord Chaitanya's Golden Age Sankirtan Yagna. श्रील प्रभुपाद जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी और उनके संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी उसको सही साबित करने के लिए इस धराधाम पर आए. And this Sankirtan Yagna, और ये संकीर्तन यज्ञ, it is predicted to go to every town and village
in the universe. इसकी भविष्यवाणी है कि संकीर्तन यज्ञ पूरे हर पृथ्वी के शहर, गांव, नगरों में जाएगा. And this prophecy will be fulfilled within a very short period of universal time of 10,000 years. और ये भविष्यवाणी बहुत कम समय के लिए जो यूनिवर्सल जो पूरा यूनिवर्सल का टाइम है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 10,000 साल के लिए गोल्डन पीरियड आएगा. In a very short period of time, ये बहुत अल्प समय है. from 1967 to 1977, Srila Prabhupada laid the foundation of the Krishna consciousness movement. 1967 से 1977 तक ये कम अवधि के बीच श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन की नींव रखी, which was to fulfill the prophecy that Lord Chaitanya's holy name would go to every town and every village. जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नामों का कीर्तन सभी शहर, नगर और गांवों तक फैलाने के लिए की गई है. Then in 1977, 1977 में when Srila Prabhupada was in his last days श्रील प्रभुपाद on this planet, अपने अंतिम समय में इस धराधाम में जब अपना लीला समाप्त कर रहे थे, and his health was failing him, डॉक्टर्स बोले he announced to the devotees that I want to go to Gita Nagari, a farm we have in America. तो प्रभुपाद जी भक्तों को बोल रहे थे कि मुझे गीता नगरी फार्म में जाना है. उस समय उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी प्रभुपाद जी बोल रहे. So when the devotees were preparing for the journey, तो डिवोटीज जो भक्त उनको ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, they asked Prabhupada, why are we going? तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, हम क्यों जा रहे हैं? Why are we going with you in this health condition? आपका इतनी तबीयत खराब है, सही नहीं है, फिर भी हम क्यों जा रहे हैं? Prabhupada said, प्रभुपाद जी ने कहा, I am going to bring you to a new phase of Krishna consciousness. प्रभुपाद जी ने कहा, हम आपको कृष्ण भावनामृत आंदोलन के एक नए फेज He said that up to अध्याय की तरफ आपको दिखाने जा रहे हैं. up to now, 50% of my work is done. अभी तक सिर्फ मैंने अपना 50% जो हमारा मिशन था उसको पूरा किया. There were 108 temples around the world. 108 मंदिर तक हो चुके थे. Prabhupada's books have been translated into 60 languages. प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं more than 60 भाषाओं में प्रकाशित की गई थी. There were 30-40 farming communities, और उस समय 30-40 कम्युनिटीज थी. a number of gurukulas, गुरुकुल्स, फार्म कम्युनिटीज, institutes of learning, लर्निंग इंस्टीट्यूट्स थे. a congregation that went into millions, और जो कांग्रेगेशन जो भक्त थे वो लाखों की संख्या में थे. fully initiated devotees over 5,000. और जो दीक्षित भक्त थे वो 5,000 से ज़्यादा थे. And already the holy name of Lord Chaitanya had been heard in every town and every village on the earth practically. और चैतन्य महाप्रभु का जो पवित्र नाम सब विश्व के सभी शहर, गांव और नगरों में सुना और गाया जा रहा था. There were Rath Yatra festivals all over the planet. रथ यात्रा जो महामहोत्सव है वो सभी जगह पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा था. Heads of states, some of the most prestigious people in the business world and in political communities and other things had become devotees of Krishna. और बहुत से ऐसे जो प्रसिद्ध लोग और बिजनेस पीपल वो लोग भी भगवान कृष्ण के भक्त बन गए. Hare Krishna had become a household word. Everybody knew the name Krishna all over the planet. तो पूरे इस पृथ्वी पर सभी लोग हरे कृष्णा बोल रहे थे और ये आम शब्द बन गया था. In simply less than 10 years. सिर्फ 10 सालों में ये हुआ. And Prabhupada said
This is only 50% of my mission. प्रभुपाद जी ने बोला ये सिर्फ मेरा 50% मिशन पूरा होता है। He said, I am leaving the other 50% to you. और प्रभुपाद जी ने कहा मैं जो बचा हुआ 50% आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। And we asked Prabhupada, what is that 50%? और डिवोटीज ने पूछा प्रभुपाद जी वो 50% क्या है? He said, that is to establish Varnashram. और प्रभुपाद जी ने बोला कि वो वर्ण आश्रम धर्म को स्थापना करना यही अगला 50% कार्य है। And he said Varnashram would be the government of the world. प्रभुपाद जी ने बोला वर्ण आश्रम जो होगा वर्ण आश्रम धर्म वो पूरा वर्ल्ड को गवर्न करेगा। Just as it was with Maharaj Yudhishthira, Maharaj Prithu, Lord Rishabhadev, so many great kings of the planet, Bharat Maharaj. जैसा कि बड़े-बड़े जो महान राजा हैं, राज ऋषि हुए, महाराज पृथु, महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, पृथु महाराज, ये सब। This planet was named Bharat after the great Bharat Maharaj because he was ruling the entire planet under the system of Varnashram. ये पृथ्वी लोक का नाम पहले भारत भरत महाराज के नाम पर हुआ और पूरा जो ये पृथ्वी थी उस पे वर्णाश्रम धर्म था। Now, of course, Bharat is shrinking. यद्यपि भारत छोटा होता जा रहा है, Wherever the principles of Maharaj Bharat are followed, that is still known as Bharat Varsha. जहाँ पर भारत महाराज के ने जो सिद्धांत की स्थापना की वर्णाश्रम धर्म वो फॉलो हो रहा है, वो भारतवर्ष। We've seen even in recent history, some of Bharat is going away. It is no longer Bharat. हाँ भी देखते हैं कि जो रिसेंट अभी इतिहास है उसमें भी भारत कुछ भारत का बहुत सारा हिस्सा चला गया। Burma used to be called Brahmadesh. बर्मा जो उसको Brahmadesh. बर्मा को ब्रह्मदेश बोलते थे। Thailand was formerly Sham. Then it became Siam. थाईलैंड को श्याम बोलते थे, फिर श्याम हो गया। They broke away. वो सब टूट गए। Bangladesh broke away. बांग्लादेश भी टूट गया। Nepal broke away. नेपाल भी टूट गया। Afghanistan broke away. अफगानिस्तान टूट गया। The kingdom of Maharaj Yudhishthira used to extend all the way into the Philippine Islands. जो महाराज युधिष्ठिर का राज्य था पूरा सब जगह उसका विस्तार था फिलीपींस तक। And covered Indonesia. Indonesia. इंडोनेशिया तक। Which we now know still some remnants are there in Bali. और बली तक। माली। But they no longer were Bharat. लेकिन वो सब अभी भारत नहीं। Because the principles of Maharaj Bharat were no longer being followed. क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है जो सिद्धांत है भरत महाराज के वो फॉलो नहीं हो रहे। The governance of the world was not based upon Varnashram. तो जो ये सरकार है वो भारत वर्णाश्रम धर्म के ऊपर नहीं टिकी। So we have seen this even in our life. और अपने जीवन में भी देख सकते हैं। Even there was a move in Congress under Indira Gandhi to change the name of Bharat to India. एक मूवमेंट चल रहा था इंदिरा गांधी के समय कि भारत को भारत का नाम बदल के इंडिया रखेगा। So Bharat is a land of Dharma. तो भारत धर्म भूमि है। So Srila Prabhupada, he wanted to re-establish Varnashram in this world. श्रील प्रभुपाद जी ये वर्णाश्रम धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। Through the Sankirtan Yagna, the 10,000-year golden age of Lord Chaitanya Mahaprabhu. संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से जो कि 10,000 साल तक इस पृथ्वी पर रहेगा। And he left that task to us. और उन्होंने ये अधूरा कार्य हम लोगों के ऊपर छोड़ा। He left that task to all the residents of Bharatvarsha. और उन्होंने ये जो अधूरा कार्य पूरे भारतवासियों के ऊपर छोड़ा। On the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, Bharat Bhumi Haila Manusya Janma Yar Karikara Para Upakara. He said that this message of Lord Chaitanya
will go to every town and village in the world. By who? By the residents of Bharata, Bhumi, Haila, Manusha, Janma, Yar, those who have taken human birth in the holy land of Bharata. चैतन्य महाप्रभु का निर्देश की जो भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है वो इस संदेश को पूरे जगत में लेके जाएंगे तो वो किसके लिए बोला गया है जो भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है भारतवासियों के लिए And this army of Lord Chaitanya would go all over the planet and reestablish Varnashram. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आदमी है पूरे विश्व भर में जाएगी और वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करेगी. That meant the end of democracy, the end of communism, the end of anarchy. That meant to overrule all the governments of the world. इसका मतलब है जितने भी अभी आसुरिक जो सरकारें हैं और जो भी तथाकथित ये डेमोक्रेसी है और जितने भी सब गवर्नमेंट हैं वर्णाश्रम धर्म के अलावा उन सब का अंत. Prabhupada said if they knew what was in my books, they would kill me. If they knew what was in my books, what I'm teaching, they would kill me. प्रभुपाद ने बोला कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मेरी पुस्तकों में क्या है तो लोग मुझे मार देंगे. So then on the way to Gita Nagari, Prabhupada got sick and he only made it to London. तो गीता नगरी जाते समय प्रभुपाद जी बहुत बीमार हो गए और सिर्फ लंदन तक जा पाए. But we asked Prabhupada, हमने प्रभुपाद जी से पूछा how will we do this amazing task of changing the whole world into Krishna consciousness? कि हम कैसे ये पूरे विश्व को बदलेंगे. How will we be able to change this whole demoniac civilization, this whole demoniac government? How will we be able to establish Varnashram all over the world, which Prabhu said is 50% of the movement? तो हम ये आश्रित सभ्यता को ये सरकार को कैसे बदलने की शक्ति हमारे में कहाँ से मिलेगी. हम ये कैसे बदल पाएंगे जो कि 50% टास्क जो आपने दिया है वो कैसे कर पाएंगे. वो शक्ति कहाँ से मिलेगी. This is the beauty of the Brahma Sampradaya. ये ड्यूटी है ब्रह्म संप्रदाय की. This is the prophecy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. ये चैतन्य महाप्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है. And we see how the world is overwhelmed with Kali Yuga, overwhelmed with demoniac principles. हम देख सकते हैं कि पूरा विश्व कैसे ये आसुरिक सभ्यता से भर गया है. Prabhupada, how will we do this? तो प्रभुपाद हम इसको कैसे करेंगे. वर्णाश्रम को कैसे स्थापना करेंगे. 50% of your work. और 50% जो आपने कार्य हम पर दे दिया हम इसको कैसे पूरा करेंगे. How is it to be done? ये कैसे होगा. Prabhupada said, I will teach you how to sit down and live off the land. I will teach you how to sit down and live off the land. आपको सिखाएंगे कि आप कैसे बैठ के इस live off the land. That's why he was taken. Live off the land means self-sufficiency. The land, the cows, and Krishna. हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एक जगह इस धरती पर बैठ के और आत्मनिर्भर बन सकते हैं. By that principle, we will be able to engulf the entire world with Krishna consciousness and reestablish Varnashram. इस तरह से जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हम पूरे जगत को कृष्ण भावना भावित कर देंगे. He had many farm communities. उनके पास बहुत कृषि समुदाय थे. We had many cows. हमारे पास बहुत सारी गायें हैं. But they were not sitting down and living off the land. पर वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास नहीं कर रहे. Our farm communities were more or less country clubs, where you could go to the country, there were cows, we would grow a little bit of food maybe, but actually we were not living that agrarian life. हम लोग जो कृषि समुदाय बनाए वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे. वो सिर्फ वहाँ कुछ दिन आत्मनिर्भर नहीं थे. हम वो जो agrarian life जो कृषि समुदाय में रहते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं उस तरह से हम लोग नहीं बन पाए. This present day of life that we are living in is
only known to civilization for less than 100 years. जो हम अभी ये प्लेनेट लाइफ जी रहे हैं वो सिर्फ 100 साल के अंदर ही हमें ये सब प्राप्त हुआ है। इसके अलावा और कुछ We're talking about the politics, we're talking about the motor, we're talking about the oil, we're talking about the cities, we're talking about the modern civilization, we're talking about the Wi-Fi, we're talking about the computers, we're talking about modern civilization as we know it today. हम लोग ये अभी मॉडर्न सभ्यता है इसके बारे में बात करते हैं और जो जो तथाकथित तकनीक है उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। Just as life, we have seen it build up to a crescendo which we are at now. In the same thing with our life, we now see it deteriorating and falling apart. तो ये जो प्रोपेगेंडा है वो कुछ समय में ये 100 साल के अंदर जैसे बना है हम देखेंगे ये धीरे-धीरे खत्म भी हो जाएगा। We are now living presently today on the brink of World War III. और हम अभी बस द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में अभी जी रहे हैं। With nuclear bombs that are ready to devastate a good portion of the planet. और ऐसे बॉम्ब्स हैं जो कि अभी जो सभ्यता है और उनको नाश करने के लिए बस तैयार है। And Srila Prabhupada predicted 50 years ago that after 50 years will be the end of modern civilization as we know it today. प्रभुपाद जी ने भविष्यवाणी किया कि 50 साल बाद जो मॉडर्न सभ्यता है आधुनिक सभ्यता है उसका नाश हो जाएगा। The demoniac civilization called the New World Order, who is actually controlling over 90% of the wealth of this planet, they have an Agenda 22 where the 8 billion people living on the earth should go down to 3 billion. तो कुछ ही समय में जो 8 बिलियन पूरे विश्व की आबादी है धीरे-धीरे खत्म होकर 3 बिलियन रह जाएगी। So what will happen to the world, to the population of the world when we go through this next phase of material advancement? तो ये सभ्यता का मानव सभ्यता का क्या होगा जो हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे। Our natural resources are running out through the chemicals, through the food industry, through the pharmaceutical industry. They're destroying within the living entity the sentient being to believe in God. तो ये जो नेचुरल संसाधन है प्राकृतिक संसाधन है वो सब खत्म होते जा रहे हैं। Oil is running out. We have peaked. तेल है वो भी खत्म हो रहा है। Governments are falling all over the planet. जो सरकारें हैं पूरे पृथ्वी पर सभी जगह गिर रही हैं। Wars are raging. युद्ध की शुरुआत हो रही है। Food shortages, natural resource shortages. भूखमरी हो रही है। And we're supposed to be entering a golden age. और इस तरह हम जो गोल्डन एज की तरफ बढ़ेंगे। So Prabhupada taught us how we would counter this. प्रभुपाद ने बताया इन सबको हम कैसे काउंटर करेंगे। And he said, let us just sit down and live off the land. और उन्होंने बताया कि लेटस हम लोग एक साथ आके बैठते हैं और ऐसे कृषि समुदाय बनाते हैं जहां हम आत्मनिर्भर हो सकें। So that's the secret which Prabhupada gave us, how to face the rapidly changing end of modern civilization as we know it ये today. रहस्य है जो श्री प्रभुपाद ने बताया कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन चेंज हो रहा है तो कैसे हम इसको काउंटर कर सकते हैं। And how the golden age of the chanting of Lord Chaitanya's Sankirtan movement would evolve. और कैसे स्वर्ण युग जो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी किया जिसमें भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन होगा वो कैसे उसकी शुरुआत होगी प्रभुपाद ने बताया। So that he left to you to do. वो हमारे ऊपर प्रभुपाद जी ने छोड़ के गए हैं। Jai Grantara Śrīmad-Bhāgavatam Aki. जय। We can join the ceremony, Prabhu. क्योंकि इस प्रभु जी की